Hello everyone. This question appears in Class 6 NCERT chapter of whole numbers. This is fifth question of its exercise 2.2. So the question says that a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? So हमें गिवन है petrol filled on Monday, given है 40 liters petrol filled on नेक्स्ट डे. तो नेक्स्ट डे हो जाएगा हमारा ट्यूसडे. ये हमें गिवन है 50 लीटर्स. सो टोटल पेट्रोल फिल्ड ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 50 is equal to 90 liters. अब हमें गिवन कॉस्ट गिवन है. इफ द पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 44 पर लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 liter ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, ये गिवन है हमें 44 रुपीज. सो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच डिड ही spent in all on the petrol. So money spent on petrol is equal to, अभी हो जाएगा हमारी टोटल लीटर पेट्रोल फील्ड इनटू कॉस्ट ऑफ पर लीटर 44. ये हमारी 3,960 rupees. So he spent 3,960 rupees on petrol. Thank you.